Good afternoon, students. Today we will cover your science book, chapter 8. So, name is Animal Reproduction. Here we will go through in details. We can commonly see dogs around us. You have seen dogs around your home. I have also seen. So, we all see dogs roaming here and there, street dogs. And here it says, does a dog live forever? हमेशा के लिए कोई कुत्ता है वो रहता है क्या? नो. A dog has a limited lifespan. As you know, a dog is having 12 years lifespan. Okay, the dog lives for 12 years. After completing its lifespan, it dies. Ultimately, dog dies. All animals die. We also die. So we all are having our own lifespan. However, during the lifespan, dogs produce their young ones. The young ones called puppies. The young ones of dogs are called puppies. So, young dogs are called puppies. The puppies grow into adult dogs like their parents. Okay, the puppies in due course of time they also becomes adult like their parents. This ensures that they are more like them when they have died. इसका मतलब क्या है? जब कोई डॉग मर जाता है तो उसका नाफिक उसका यंगर जनरेशन खड़ा हो जाता है. तो सिमिलर टाइप कोई बोल रहा है ना दी पपीज ग्रो इनटू अडल्ट डॉग्स लाइक देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स का माफी अडल्ट डॉग्स हो जाता है. दिस एंश्योर ये एंश्योर क्या करता है दैट देयर आर मोर लाइक देम व्हेन दे हैव डाइड. जब वो लोग मर जाते हैं उनका माफी और एकाधिक डॉग रहता है. दिस वे of life goes on for dogs. This way life goes on for dogs. ऐसे डॉग का लाइफ हो जाता है. This is true for all other animals. दूसरा एनिमल्स के लिए भी ये ट्रू है. Not only for dogs, this holds good for other animals too. The process by which animals produce young ones of their own kind is called reproduction. So what do you mean by reproduction? Reproduction is a process by means of which an animal produces his type of other animals. Suppose a man produces a baby, a dog produces a puppy. Similarly, all the other animals produce their individual creature, same creature. Okay, so this process is called reproduction. Animals reproduce in one of the following ways. रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? कैसे सिमिलर टाइप का एनिमल पैदा होता है? कौन सा प्रोसेस? कैटेगोरिकली और ब्रॉडली टू टाइप्स का प्रोसेस. One by laying eggs, second by giving birth to young ones. तो क्या होता है? अधिकतर अंडा देते हैं. चिड़िया, सांप, कीड़े मकोड़े बहुत सारे ये सब अंडा देते हैं. तो उसका बाद कुछ नया बेबी पैदा करते हैं. Like mammals, we'll come regarding mammals later. First of all, we see the animals who is giving or who is laying eggs. In the next stage, see animals that lay eggs. Here, this is the structure of an egg. Very interesting structure. You see, this is a complete egg. So we will come to this. Birds, insects, amphibians, fish, and reptiles reproduce by laying eggs. You have already covered about birds, insects, amphibians, fish, and reptiles. In earlier chapter, you have gone through this. Their habitat, their lifestyle, okay, their food. So here also we will study the reproduction of these
animals. So they give birth to eggs. They lay eggs. These creatures, birds, insects, amphibians, fish, and reptiles, they reproduce by laying eggs. Her process is laying eggs. The baby develops outside the mother body in the egg. The baby animal develops outside the mother body in the egg. मदर बॉडी का बाहर में एग में डेवलप करता है. लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एग. ये एग का एक स्ट्रक्चर है. ये है बाहर का हार्ड सेल. दिस इज द हार्ड सेल. ओके. उसके बाद ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर, ये यॉक एल्बुमिन है. इसका अंदर एल्बुमिन है. ये है, ये जो है अंदर में जो है, ये है यॉक. ये यॉक है. और ये जो है, ये एम्ब्रियो है. ओके. सो ये एम्ब्रियो है, ये एल्बुमिन है और व्हाइट एग है. ये यॉक है जो येलोइश इन कलर, और ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज हार्ड सेल. So this total is the structure of an egg. So every egg has an outer cell that protects the body inside. ये inside में जो body है egg का, वो outer cell उसको protect करता है. The cell has tiny pores that allow air to pass through. अंडा में छोटा बहुत minute pores है. Pores means जो छोटा minute pores वो रहता है. वो क्यों रहता है? ये अलाउ करता है बाहर का जो हवा, बाहर का एयर अंदर देने के लिए. अंदर क्यों देता है? ये ब्रीदिंग कर सकता है. ये है एयर. अगर ये पोरोसिटी नहीं रहेगा, बाहर का हवा नहीं आएगा, ये ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा. जो एम्ब्रियो, जो यंग वंस जो का अंदर है, एम्ब्रियो उसको बोलते हैं, वो नहीं कर पाएगा ब्रीदिंग. सो दिस enables the baby inside the cell to breathe. ब्रेथ करने के लिए ये हार्ट सेल में क्या है ना, पोर्स है. दिस थिक जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड दिस सेल इज कॉल्ड द एग व्हाइट और एल्बुमिन. द जेली लाइक थिक लिक्विड प्रेजेंट इन द एग इज कॉल्ड एग व्हाइट और एल्बुमिन. इसको एल्बुमिन बोलते हैं. द येलो पोर्शन विद इन द एल्बुमिन इज कॉल्ड यॉक. जो एल्बुमिन का अंदर में जो येलो पोर्शन होता है उसको यॉक बोलते हैं. सो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज एल्बुमिन, यू शुड रिमेंबर व्हाट इज यॉक, यू शुड आल्सो रिमेंबर व्हाट इज सेल. सेल आर हार्ड, outer layer hard cell, and egg white is called albumin, which is present inside the egg. It is jelly like substance, whitish in color, and the yolk is yellowish in color. The yolk contains a developing baby called embryo. Embryo क्या है? It is the developing baby. Okay, that is being developed inside the egg of an egg. तो egg का अंदर yolk है, egg का अंदर albumin फर्स्ट है, then yolk है, egg का अंदर embryo है. Embryo में क्या होता है? The young ones is being developed. The developing baby embryo में है. यॉक also contains food for the developing embryo. ये यॉक में फूड भी रहता है जो कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को देता है. हवा लेता है बाहर से, हार्ट सेल का पोर्स का थ्रू से, और खाना लेता है यॉक से. और एम्ब्रियो कहाँ पे रहता है ना, यॉक का अंदर. ओके. So this is all about the structure of egg. Next come to birds. All birds lay eggs. Many birds build nests to keep their eggs. The embryo inside the egg needs warm conditions to develop. So the parents birds either sit on the eggs or keep them in a warm place. Young birds जो होता है, parents birds, वो either eggs का ऊपर बैठता है और उसको गर्मी जगह में छोड़ देता है. In this picture, this is the picture
of a hen in its life cycle. This is the life cycle of a hen. This is hen. Okay. So hen lays eggs. This is egg. So first hen lays eggs. So this act of some birds to keep their eggs warm by sitting on them is known as incubation. Incubation is a process by means of which the adult hen or the mother hen sits over the eggs for many days, say around 21 days. She sits over these eggs, and what happens to these eggs? The eggs hatch. Because she is sitting over the eggs are kept warm for prolonged period, and it goes through various stages, and finally the eggs hatch. So incubation is the process of keeping the eggs for number of days, either by sitting the mother hen, or by exposing these eggs to a warm place. If we keep the eggs warm, the period is mandatory for the eggs to be developed and hatch to the newborn. Okay, so the act of some birds to keep their eggs warm by sitting on them is known as incubation. Incubation क्या है? तो जो birds एक के ऊपर बैठता है 20-21 दिन तक, जब तक वो हैच नहीं करता है, वो प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोलते हैं. इंक्यूबेशन सॉन में भी एक को रख के सेफ जगह में रख के गर्मी देने से इंक्यूबेशन होता है. तो ये यहाँ पे वो मदर है सीड्स होते हैं and the process is called incubation. After some days, the eggs breaks and baby birds comes out of it. This is called hatching. Hatching क्या होता है? Incubation के बाद वो लेयर को फटा देता है, eggs का हाथ को फटा देता है और बेबी hen निकल जाता है, जिसको चीक बोलते हैं. So this is called hatching. The baby birds cannot fly. Parents bird take care of them until they are able to look after themselves. जब तक वो खुद का देखभाल नहीं कर पाएंगे तब तक ये बेबी बर्ड लुक आफ्टर करते हैं, या केयर करते हैं चिक को. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे गिव द यंग ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. फूड देते हैं और एनिमीज से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं. द बेबी बर्ड स्लोली ग्रोज इनटू एडल्ट. बेबी बर्ड देन क्या करता है? स्लोली एडल्ट बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. सो hen lays eggs hatch into chick then grows into adult hen. So this is the complete life cycle of a hen. Next page. Insects. We will come to now insects. All insects lay eggs. All insects lay eggs. The young ones of most insects are very different from adults. Adults से पूरा अलग होता है insects का जो young ones बच्चे. They undergo many changes before becoming adults. Adults होने का पहले बहुत सारे चेंज होता है उनका ऊपर. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यंग वंस ऑफ एन इंसेक्ट इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या है? जो छोटे इंसेक्ट होते हैं वो बड़ा इंसेक्ट होने का बीच में जो प्रोसेस होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो चेंजेस होता है, बहुत सारा चेंजेस होता है, वो मेनी चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. So what is metamorphosis? Meta means many and morphosis means changes. So insects का क्षेत्र में वो मेटामॉर्फोसिस होता है क्योंकि जो insects का जो बच्चा, जो adults, जो young ones वो टोटली अलग होता है adult insects से. So young insects जो adult insects होंगे, जो प्रोसेस चेंज होता है बहुत सारे, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. Insects such as butterflies and houseflies undergo complete metamorphosis. Butterfly, housefly, dragonfly, these are various types of flies, and these flies undergo a complete metamorphosis, complete changes. Each stage of their life cycle is different from other.
एक स्टेज दूसरी स्टेज से अलग. Let us learn more about the life cycle. Here it is the life cycle of a butterfly. A butterfly lays eggs on the leaf. First, a butterfly lays eggs on a leaf. Okay, this is in the egg form. Second, hatches, an egg hatches into a tiny caterpillar. वो हैच करने के बाद वो कैटरपिलर हो जाता है. क्या बोलते हैं? कैटरपिलर. जो बटरफ्लाई का एग पहले होता है पत्ता में, उसका बाद वो एग्स गर्मी होने के बाद हैच करता है. हैच करने के बाद वो ऐसे कीड़े कैटरपिलर को पैदा करते हैं हैच से. तो ये कैटरपिलर क्या करता है? ये खाना खाता है पत्ता से. वो पत्ता से जो एक एग्स को जन्म देता है बटरफ्लाई, वही वेरियस पत्ता क्या करता है? कैटरपिलर होने के बाद पत्ता खाता है. सब पत्ता में वो जाके पत्ता को नष्ट कर देता है खा खा के. तो खा खा के मोटा होता है और फैटी भी होता है. चर्बी जम जाता है, पूरा बिगर एंड फैट हो जाता है. वो तब तक खाता है जब तक वो मोटा और पूरा फैटी नहीं हो जाता है. एंड उसको कुछ दिन बाद वो स्टॉप कर देता है खाना खाने का, क्योंकि सफिशिएंट खाना खा लेता है. जितना खाना है उससे ज्यादा खा लेता है कैटरपिलर. उसके बाद कैटरपिलर क्या होता है? प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट होता है. प्यूपा स्टेज क्या है? द कैटरपिलर नाउ स्पिन्स अ प्रोटेक्टिव सिल्क केसिंग. वो स्पिन करता है, वो तैयार करता है. तो अपना बॉडी से वो क्या करता है? एक तो सिल्क केसिंग या सिल्क कवर या सिल्क स्ट्रक्चर वो तैयार करता है कैटरपिलर अराउंड इट्स बॉडी. ये बॉडी का बाहर में वो स्पिन करता है एक तो सिल्क केसिंग को. सिल्क का एक केसिंग वो तैयार करता है. उसका वो अपना मुंह से वो तैयार करता है, पूरा चारों तरफ एक तो स्पिन करता है या बुनाई करता है एक तो केसिंग को या एक तो सेल को. उसको हम बोलते हैं कुकुन. सो कुकुन क्या है? ये एक केसिंग है जो बटरफ्लाई का एक से कैटरपिलर का द्वारा तैयार होता है प्यूपा स्टेज में. सो ये स्टेज को लाइफ साइकिल ये स्टेज को प्यूपा बोलते हैं. सो कैटरपिलर नाउ स्पिन से प्रोटेक्टिव. ये कैटरपिलर क्या करता है? स्पिनिंग करता है, बुनाई करता है सिल्क केसिंग को. केसिंग सिल्क से तैयार होता है. वो खुद अपना सलाइवा से वो सिल्क के थ्रेड से ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको सिल्क केसिंग बोलता है. तो एंड उसको कुकुन नाम देते हैं. कुकुन इज द करेक्ट नेम ऑफ दैट सिल्क केसिंग by caterpillar. This stage of butterfly life cycle is called pupa. Pupa is the third stage of the butterfly's life cycle. Inside the cocoon, the caterpillar begins to change into a butterfly. cocoon का अंदर वो धीरे-धीरे चेंज होके butterfly हो जाता है. So this is the four stages of a butterfly. When the butterfly is ready to come out, the cocoon splits open. Butterfly जब रेडी होता है आने के लिए वो क्या करता है? वो स्प्लिट करके तोड़ देता है. ये जो कुकुन को तोड़ देता है और स्प्लिट कर देता है. उसके बाद छोटा बटरफ्लाई निकलता है एंड इट क्रॉल्स. धीरे धीरे क्रीपिंग करता है, क्रॉलिंग करता है. देन वो क्या करता है? अपना विंग्स भी सुखाता है, नहीं तो उड़ नहीं पाएगा ना. विंग्स में भी सलाइवा उसका है, तो इसलिए वो मॉइस्ट है. तो अपना विंग्स को ड्राई करता है और धीरे धीरे क्रॉल करता है. उसका बाद जाके उड़ता है. कौन? यंग बटरफ्लाई. उसको तोड़ के. तो प्यूपा से बटरफ्लाई होता है. Thus a butterfly goes through the four stages in its life cycle before becoming an adult. Adult का पहले 4 स्टेज होता है. ये 4 स्टेज कवर करता है. एक कैटरपिलर, प्यूपा एंड यंग बटरफ्लाई. 4 स्टेज के बाद कंप्लीट बटरफ्लाई होता है. The cycle of a cockroach. Life cycle of a cockroach. Cockroach का भी पढ़ेंगे. The eggs are left to. Cockroach में क्या करता है? This is the cockroach here. It is egg. Cockroach lays eggs here. The eggs are left to hatch on their own. ये अपने आप hatch होता है. तो इसमें क्या लिखा है? ये फीमेल कॉकरोच lays its eggs in a case. एक केस में होता है. कॉकरोच एक केस में उसका एग ले करता है देता है इन ए डार्क एंड सेफ प्लेस. वो अंधारी जगह में
ये अंडा देती है। ईच केस हैज मेनी एग्स, हर एक केस में बहुत अंडा रहता है। तो केस में देते हैं तो द एग्स आर लेफ्ट टू हैच ऑफ देयर ओन ऑन देयर ओन। जो जो केस में अंडा देती है, हर एक केस में कुछ कुछ अंडा देती है कॉकरोच, तो ऑन ये जो एग्स है, ये एग्स हैच इनटू यंग कॉकरोच, जिसको हम नीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीम। पहला एग, ये एग, देन नीम। सो द एग्स आर लेफ्ट टू हैच ऑफ देयर ओन। तो खुद ही खुद एग्स हैच होता है। हैच होने के बाद कॉकरोच, जो यंग कॉकरोच फॉर्मेशन होता है, उसको नीम बोलते हैं। इट लुक्स लाइक एन अडल्ट कॉकरोच बट इट इज मच स्मॉलर एंड डजंट हैव विंग्स। ये बहुत ही छोटा होता है। इफ यू सी दिस टू पिक्चर्स, इज द स्मॉल कॉकरोच called neem is the big cockroach. Big cockroach is having two wings, big wings, but small cockroach doesn't have the wings. The neem eats leftover foods, pepper, cloth, and so on. Cloth, pepper, leftover foods, etc. ये सब खाते हैं। And it grows bigger and shed its skin several times before it becomes an adult. Adult होने का पहले एकाधिक बार, बहुत बार उसका स्किन को शेड करता है, स्किन को वो हटाता है, बार बार उसका स्किन हट जाता है, शेडिंग होता है। वो प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन ऑफ नीम। young cockroach shed young cockroach sheds their skin several times, and this process is called molting. And the neem eats food, pepper, cloth, and so on, and it doesn't have wings like mother cockroach or other cockroach. So thus a cockroach goes through 3 stages in its life cycle before becoming an adult. Like hen, it also covers 3 stages: egg, meat, and cockroach. Then fish and frogs. Fish are aquatic animals. Aquatic, जो वाटर में रहता है, उसको aquatic animal बोलते हैं। Fish, frogs, these are all aquatic animals. Of course, frogs are amphibian because frogs live both in water as well as in land. So, but particularly fishes are aquatic animals that live in ponds, rivers, lakes, seas, and ocean. They lay hundreds of eggs at one time. एक बार hundreds of egg को lay करते हैं, तो देते हैं। Some eggs and baby fish are eaten by bigger fish. Some eggs and baby fish are eaten by bigger fish. Bigger fish खाया जाता है। Even we also consume fish eggs. No, we also consume small fish. So the ones that are left grow into adult fish. जो बच जाता है, सब खाने के बाद, सब वेस्ट होने के बाद जो अंडा बच जाता है, बिकॉज दे ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स। सो जो अंडा रह जाता है, जो एग्स रह जाता है, वो ग्रो करता है क्या? एडल्ट फिश। एडल्ट फिश होने के लिए वो रह जाता है। दी सम एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन बाय बिगर फिश। दी ones that are left grow into adult fish. They breathe through their gills. जो fish breathe through their gills. Young fish also breathe through their gills. Gills are present outside their head. Both the sides of their head, the gills are present. How are fish and frogs alive? Both fish and frogs lay their eggs in water. Both fish as well as frogs, both of them lay eggs in water. The young ones of both breathe through their gills. The young ones gills का सहायता हेल्प से ब्रीदिंग करता है या सांस लेते हैं। How are frogs and fish different? A fish dies when taken out of water, but a frog can live both on land and water because it is amphibian. So if you take a fish out of water, fish dies. But if you take a frog out of water, it doesn't die because it can also live in water too. Life cycle of a frog. Here, the life cycle of a frog is given. Frog lays eggs here. The mother frog lays hundreds of eggs in water. The first eggs laid here, mother frog. The eggs hatch into tadpoles. तो hatch करने के बाद क्या हुआ? Tadpoles हुआ। ये tadpole is having a long
tail. It seems like a fish. It is having a long tail. The tadpole is very different from an adult frog. It has a tail but no legs. It doesn't have any legs. So when egg hatches, when a frog eggs hatch, it has to form a new young frog, which is called tadpole. Tadpole doesn't have legs, but it is having a leg. It feeds on pond weeds. पॉन्ड में जो weeds रहता है वो weeds को खाता है and breathes through the feathery gills. जो gills रहता है वो gills थ्रू से मछली के माफिक वो सांस लेता है. तो feathery gills जो है उसमें वो उसको हेल्प करता है सांस लेने के लिए. और जो पॉन्ड्स में जो weeds रहता है वो उसको खाता है. कौन? टैडपोल. And gills are present on each side of its head. Head का दो साइड्स में gills रहता है. After a few weeks, the legs of the tadpole grow. कुछ हफ्ता का बाद tadpole का leg नहीं रहता ना, उसका ग्रो होता है tadpole का legs. The tadpole starts losing its tail, then tail lose करता है. अब it begins to look like its parents. Tail धीरे धीरे छोटा होता है और उसका लेग्स भी पैदा होता है. When fully grown, the frog completely loses its tail. पूरा बड़ा होने के बाद टेल पूरा उसका लूज हो जाता है, बात फट जाता है. It comes out of the pond and starts living on damp land. जब पूरा फ्रॉग हो जाता है तब डैम्प लैंड में, जो लैंड में थोड़ा गीलापन होता है उसको डैम्प लैंड में वहाँ पे रो रहता है. इट इंसेक्ट्स, बेटल्स एंड वर्म्स, ये सब कीड़े मकोड़े खा के वो रहते हैं. An adult frog breathes through their lungs on land and through the water, moist skin in water. Adult frog क्या करता है, जो लैंड में रहता है तो वो लंग्स का थ्रू से ब्रीथ करता है, बट जब वाटर में रहता है उसका मॉइस्ट स्किन से वो ब्रीथ करता है. In which stages does the frog have a tail? कौन सा स्टेज में है? टैडपोल. When does the tail disappear? When it is fully grown and completely becomes an adult dog, it loses its tail. Then reptiles. There are many types of reptiles like lizards, crocodiles, alligators, snakes, and turtles. All these are the examples of reptiles. They also lay eggs in safe place on the ground. The eggs are warmed by the heat of the sun. कैसे वार्म होता है ना? सन का हीट से वार्म होता है सेफ प्लेस में. उसका मदर रेप्टाइल क्या करता है? मदर क्रोकोडाइल या मदर लिजर्ड ये सब अंडा देने के बाद एक तो सनी प्लेस में, सेफ प्लेस में रख देते हैं जहाँ पर सन रेस गिर सकता है. एंड सन रेस से गर्मी लेके वो अंडा तो गर्मी में कंडीशन में रखता है. और आफ्टर फ्यू डेज द बेबी रेप्टाइल्स हैच फ्रॉम द एग्स. एग से हैचिंग होके वो निकलता है कुछ दिन के बाद. Lizards, snakes and turtles do not look after their young ones. They do not look after their young ones. वो lizards हुआ, snake हुआ या turtle हुआ, ये सब कछुए, सांप और जो lizards छिपकली, ये सब उनका जो छोटे बच्चे को देखभाल नहीं करते क्योंकि they are self-sufficient, self-dependent. Crocodiles look after their young ones for a shorter period. कुछ कम समय के लिए crocodiles only look after their young ones. But snakes, turtles and lizards, they do not look after their young ones because their young ones are self-sufficient to look after themselves. Okay. Animals that give birth to babies. Now the last one, the animals that give birth to young ones and feed them on their milk are called mammals. जो animals बच्चा पैदा करते हैं उसको mammals बोलते हैं. And mammals they live through
The milk, mother's milk, they consume mother milks. Okay, most mammals are there hair on their bodies like human beings, dogs, cats, horses, lions, etc. And dolphins and whales look like fish, but they are mammals. Although they look like fish, dolphin and whales, they are also mammals. Even bats are also mammals. Okay, bats are not bats; they are mammals. The baby develop inside the mother's body. The young body of a mammal develops inside the mother's body. It stays inside the mother baby body for several months. Okay, and a newborn is born. Okay, the mother feeds the baby with her own milk. ये सब माँ अपना बच्चे को अपना ही मिल्क खिलाता है. Babies grow big, strong and healthy with their mother's milk. Okay. The following features differentiate mammals from other animals. दूसरा animal से mammals कैसे differ करता है? Point one, most mammals give birth to fully formed young ones. They give birth to fully formed young ones. New young ones पैदा करते हैं. Ditto, खुद का मापी बट छोटा बच्चा को पैदा करते हैं. तो ये mammals ही बेबी को पैदा करते हैं, जो कि दूसरा एनिमल पैदा नहीं करते हैं. वो लोग क्या देते हैं? अंडा देते हैं. दे ले एग्स, बट मामास गिव्स बर्थ टू young ones. First point. Second point, they feed their young ones with their own milk. Mammals only feed their young ones with their own milk, and they look after their young ones until the young ones are old enough to look after themselves. जब तक वो खुद का ध्यान नहीं रखते हैं तब तक वो look after करते हैं. Parents, mamas look after their young ones till their young ones look after themselves. Okay. So this is all about the complete chapter 8. So we have read about reproduction of animals. Here we have gone through reproduction of birds, insects, and in insects we have seen butterflies life cycle. In birds we have seen the life cycle of hen. Also we have seen the life cycle of cockroach. Okay, so students, please go through these entire subjects and do the homework from the given exercise of your book. Thanks.